उसको छोड़ दें, इन लोगों को तो स्लाइड दिखा दें। मैंने नहीं, मेरे स्टूडेंट ने, आई शुड नॉट से लाइक दैट। स्क्रीन में कुछ तो ले आए और कुछ तो दिख जाए। मैं तो बोल सकता हूँ बकबक इधर उधर की बातें बहुत सारी है मेरे पास हिस्ट्री सुनाने की। एक फ्लो आ जाता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मुझे भी बोलने में स्ट्रेंथ आ जाएगा। अरे लाइव छोड़ो यार, इतने लोग लाइव है इतना ही बहुत। तो चलिए दूसरी बात करते हैं। WHO GMP कितने लोगों को मालूम है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ WHO GMP एंड EU GMP? किसी को कुछ मालूम है? कोई आइडिया? कोई, मैं एक एग्जाम नहीं ले रहा, जस्ट आस्किंग। WHO GMP तुमको नहीं? तुम बोला यू नहीं, यू आर लुकिंग एट मी। एनीबॉडी नोस व्हाट इज WHO GMP? नाम तो सुना ही होगा। WHO GMP for herbal products, WHO GMP complied units. May I know who are the from the regulators in this sharing group? You are from झारखंड। आप ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर, और कोई है आपके यहाँ? तो कोई WHO GMP complied यूनिट है नहीं? नहीं है। आपके यहाँ जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी टीचर हैं या ड्रग डिपार्टमेंट से दूसरे साइड के हैं या आयुष साइड के? एलोपैथ। कितने लोग हैं आपके यहाँ इंस्पेक्टर? 18 है। तो दे आर ऑल फ्रॉम द एलोपैथ साइड। This is irony what I will share in my presentation also. What are the uh, problems? What are the areas in many places in the country? What happens? Either the people are from the other side, I mean a contemporary so-called modern side, and a very few, or the teachers, mostly the teachers from West and who are designated as a drug inspector or drug licensing authority. This make a problem. As a teacher, my approach will be different. As a researcher, my approach will be different. And as a regulator, my approach will be different. So what happens? We are mingling all this thing as a either inspector or licensing authority or DLO, what you call. So this is also a problem in implementation, in implementing GMP, right, and also WHO GMP also. So this is one of the biggest challenge, because many a times the people who go in the field, they have much better exposure and much better understanding of the provisions rather than the people like us, like we are sitting in a teaching institution and we are getting a few. If you see, अब आ गया मैं अपने फॉर्म में जो बातें करने, यहाँ दिख नहीं रहा यार, इस पे दिख रहा है, इनको भी दिख रहा है। इसमें मेरी स्लाइड आगे आगे ये आगे बढ़ नहीं रही, मेरा काम तो हो गया, नहीं जाने दो उधर नहीं, मुझसे बोलना पड़ेगा, वहीं से बोलता हूँ यार फिलहाल तो। चलो ठीक है, लेट अस, ठीक है। So if you see the what is the regulation, why regulation is needed? Regulation, we all understand resurgence of a youth products, demand, corona was an opportunity, and the default interest, default interest, at least the Indian community, Indians of course didn't know about the plant drugs, supposed to be safer, easier, cost effective, may or may not be 100% correct. May not be 100, but it all gives the way for the regulation. It created a platform for the regulation. यहाँ से भी नहीं चला। अच्छा, अब यहाँ पे चलिए ठीक है। तो हाँ, तो ठीक है। So this is increasing interest, inbuilt faith. This all created the need, and that need we all understand. If something, चलो ऐसे आगे चला देना है। If something, what is said? If something works, let us use. This is a common funda. If something is working, we go for it. Let us use it. And when it become used, then let us regulate it. तो यही प्रोसेस हमारे प्रोबेबली सारे सिस्टम में से ही होता है। रेगुलेशन ओनली बहुत, and the slide coming, if you see what the presentation is coming, if
you see, before the regulation, pre-independence era की पहले की बात करें, पहले क्या होता था? When there was one sage, एक आश्रम होता था, एक घराना होता था, and that goodness of that घराना, that ashram works a lot. कि हाँ, इस आश्रम की दवा है, that's good. That people had the faith. This is the pre-independence era. Then the independence era came around something like 40s and 50s. What happened? We all came with the Drug and Cosmetic Act. We all came with the different schedules and different. Now, from that area, we evolved further, like phytopharmaceutical. Now the regulation changed. We moved forward. GMP, WHO, GMP के साथ एक साथ नया criteria है कि phytopharmaceutical. Anybody have any idea about phytopharmaceutical? ये क्या है? Is very right. The new, exactly not a new category. It is basically plant-based drugs. A fraction, a fraction of the extract, which has at least four identifiable phytochemical constituents or the indicators. That 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 phytopharmaceutical drug has been named as a phytopharmaceutical. At least four, you may call the markers, like not exactly the markers. The biochemical compound has to be identified, minimum four, quantitatively as well as qualitatively also. This has to be identified, and that came for the specific plant drug, and that is a fraction of a extract. That is, though it is from the plant, it is still being regulated by the DCGI, the other side. It is not regulated by the Ayush licensing body. So this way the regulation is coming. We earlier we were Gharana, ye Baba Ji ki ashram ki dawa is fine. Or greed is also there. We also talking about the greed. Greed is also involved when we talk about the regulation. When you want to regulate something, the greed always comes. If you want some asa or iska, you can have in a you want 1,000 liters of any asa or iska, it will be prepared very quickly. So there must be some regulation. That's why the purpose a lot of things have been added, a lot of provisions have been added. GMP came in the picture, drug and cosmetic came in the picture. The purpose was simply to make the thing regulatory and safe products to be made available to the this history I was talking, the NASA zero defect rocket technology, the GMP came in 1988. If we see that, being a scholar of Ayurveda, if I turn the pages of the history, our text, especially Rashas, a lot of descriptions are there. Rasala, the Rasen Chudamani one text talks about the Rasala. People from the Ayurveda side definitely must be knowing. They have even said कि where should be pharmacy should be established. आतंक देश रहे थे जहाँ जहाँ शोर शराबा न हो. They should be away from the cremation ground. Something thinking long back when there was no science at all. It was experiential science. The people have spent those time. Even descriptions are available. How many, where you will process where you will process, where you will go. Prachalan, washing will be there. These all provisions are there. I am not going to detail of those provisions. But the details are available in old classics of the Ayurveda that talks about. The lead could be taken from them. If the people were aware कि यस सड़क के किनारे अगर फार्मेसी होगी तो लग आएगा, fumes आएंगे. They were having the idea. They knew where should be fireworks should be done. ईशान कोट पे क्या होगा, where your precious material should be kept. Some idea who should do the processing also. Kalini, there is a lot of descriptions are available. So that time, if you see GMP or history of GMP, definitely 13th century, 14th century, the classic those times, we also have this references about that. GMP, we all understand GMP. GMP is nothing but it is a kind of the quality assurance. What is the quality that ensures? बेसिकली ऐसे समझे कि एक एश्योरेंस है जो इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट जो आपका बनता है, जो इंटेंडेड यूज है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कोई आप प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर लीवर, फॉर लंग, व्हाटएवर यू डू, it assures it assures the product are the कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस. एक बार आपने काढ़ा बनाया, अगले बार बने ना बने तो उसकी कोई बात नहीं होती. तो जीएफपी यही इंश्योर करता है कि वो प्रोडक्ट बार बार बने, जो उसका इंटेंडेड यूज है और जो मार्केट की नीड है और जो उसके प्रोविजन है. तो जो इंटेंडेड यूज है प्रोडक्ट की, जो स्पेसिफिकेशन है, इट इज ए दैट पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस
to assure. Anybody know what is the difference between quality assurance and quality control? Very quickly. चलिए, तो क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है. क्वालिटी हम जानते हैं, क्वालिटी काइंड ऑफ द स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं, एक मानक कह सकते हैं क्वालिटी. Quality control and quality assurance are very frequently used in GMP also. Assurance is nothing which ensures the quality is there. आप बार बार उसको क्वालिटी कंट्रोल में आपने पैरामीटर फिक्स कर दिया कि ये टेक्निकल पैरामीटर्स है, these are the क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर्स. एश्योरेंस में ये एश्योर करता है कि वो क्वालिटी, वो प्रोसेसेस, वो द थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग, that all are assuring yes that quality control measures are going on. So similarly the GMP assures the quality assurance of that for the particular product is a consistently made. ठीक चल रहा है. आप लोग सारे सत्यनारायण भगवान की कथा में, जहाँ पंडित जी जब बोलेंगे शंख बजाना है तभी फूल डालिए, तभी डालेंगे. आप लोग फ्री है, क्योंकि मैंने कहा ना इट इज नथिंग न्यू टू फॉर यू एंड नथिंग न्यू टू मी आल्सो. यू पीपल कैन इंटरप्ट मी एनी पॉइंट ऑफ टाइम. दूसरे तरीके से भी इसको समझा सकते हैं, बहुत सारी साइडें उसको पढ़ भी सकते हैं. इंटरेक्टिव, अगर आप कुछ बोलते रहेंगे लगेगा कि हम दोनों लोग इंटरेक्टिव मूड में हैं. कुछ नहीं तो मुस्कुराते रहिए, आप गाजियाबाद में है तो मुझे अच्छा लगेगा. कुछ तो लोग देख रहे हैं मुझे, कुछ लोग अटेंटिव हैं, सोते भी रहिए, कोई बात नहीं. द पर्पज ऑफ व्हाट इज द पर्पज ऑफ जीएमपी? डेफिनेटली फॉलोइंग द रिक्वायरमेंट फॉर द जीएमपी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होना चाहिए, एंड दैट गिव्स यू कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी. बात वही होगी कि एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए. प्रोडक्ट क्या होगा? जो इंटेंडेड यूज होगा, जो मार्केट नीड होगी और जो रेगुलेटरी प्रोविजन में फिट करेगा. यही यही एक ओनली कॉज है जीएमपी को ले आने का, जीएमपी के एग्जिस्टेंस का, जीएमपी के प्रोविजंस का. बेसिक सम टेनेंट्स आर देयर, वी ऑल अंडरस्टैंड. नॉट रिटन, सबसे बड़ा जो है, नॉट डॉक्यूमेंटेड, नॉट डन. जीएमपी ऑलवेज से व्हाटएवर यू डू, हम जानते हैं, हम वैद्य लोग बहुत समझदार होते हैं, बताते ही नहीं है चीजें. वी ऑलवेज डू लाइक दैट, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कहने में भी नहीं बताते, बताने में भी नहीं बताते. ठीक है, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स डोंट disclose their SOPs, but it is against the GMP. One, it is not written. If some procedures is not written, it is assumed, it is known, it is not done. So one must write what SOPs, what we are following, instruction, procedures should be very clear. Non-ambiguous. It should not be mixing. It should not be mixing. All the procedures should be very clear. Also, the manufacturing process should be clearly written. It has to be part of GMP. The people who are from the, they must be administration, must be knowing. People from the teaching side also must be knowing. This all has to be done. Distribution, minimum risk. GN, what risk कैसे आएगा? Risk आएगा material में, risk आएगा processing में, risk आएगा finished product की packing में, or even sometime to distribution also. So this GMP, this all, if things are written in a proper manner, this also diminishes the risk which is involved in this. Operators are the trained. The operators who are making training the procedures and that has to be followed. What was the talking? The quality system. GMP all talks about the quality system. Quality means what I said, it's standards, meeting the specification of the quality. Control, we also talked about. System क्या, assurance क्या है, review the testing procedure बार बार हो रहा है. Yes, quality is going on. And entire system in that shell, GMP is a foundation stone. GMP sure करता है कि product की quality is there. Quality system is impact while you are making drug. We all understand, probably सारे लोग जानते हो. Schedule C मैंने जैसे कहा कि if you are complying the norms and details of Schedule T, automatically you are entitled for getting GMP award. Schedule T क्या है? You know what are the schedules? Schedule Act में जो descriptions करते हैं. We all understand the difference between Act and the rule. Once we come the Act, then the comes rule. We all understand. जैसे Act है 40 से 45 में, rule आता है. Rule describes the Act. Similarly, when to implement Act, जैसे Act में तो जैसे कहते हैं ना, चरक कहते हैं, सूत्र वाक्य में कह दिया. तो Act is a kind of the summarized, concise form, and rule explains. And then rule explains then what each and everything could not be explained in the rule. Word by word जितने requirement है, अब you can see on your slides also, cleaning है, raw material, working material, this all cannot be ruled. So definitely for description of all such things, we usually use schedules are there. Schedule T, basically schedule T, schedule M is also there. Anybody could talk me what is schedule M? मैं ये तो पूछ रहा हूँ. मैंने पूछा है. अरे यार तुम क्यों बोल रहे हो?
He had been working a lot. I know him in person. In person. Schedule T exclusively talks about the SU drugs, and Schedule T talks about the other side, that is the synthetic side. And Schedule T is the more vaster, Schedule is more detailed, and Schedule T I should not write like this. Schedule T has a more intelligent and more acceptable. मुझे ये नहीं कहना चाहिए. अभी WHO GMP की बात जब करेंगे, तो ए WGO WHO GMP is basically based on T. If you go through all the documents, I had been fortunate इस बिल्डिंग से कि इस बिल्डिंग में ही WHO GMP का काम शुरू हुआ था डॉक्टर लोहार के. We had been involved in imparting the training, designing the draft, checklist. Dr. Ravindra Singh, Lohar ji the, so many people were there. So we got an opportunity to learn, and I was also fortunate. I was the first auditor for WHO GMP. I have audited many of the earlier from even Dut Pape not Shreya. So I had visited. So this is a, basically if you see if you talk about, then it is based on the schedule M. There are other GMP, others also Asian GMPs are there. There are some all talks about all the basic is that you have to write down what you have done, and you have to ensure the quality system is in action. Basically, what schedule M हो, schedule M what I said is बहुत vast है. इसी तरह WHO GMP की when you talk about the WHO GMP and you see EU GMP, anybody have a heard about EU GMP? EU GMP का नाम सुना है किसी ने? नहीं, that is true. उसके बारे में it is a more stringent. Even EU GMP is a more stringent than WHO GMP. Irony is with our MSME industry, the only if you see not more than I'm not in ministry, so I cannot give you exact data. To best of my knowledge, not more than 15 companies, even it will be less 20 or 30 companies are having WHO GMP, something like that, not more than that. And it is a costly affair. It is a costly affair. Why created, when created, we will come on next slide. I have time to. Okay. So Schedule T is basically which talks about ASU drugs, and it talks about what should be happening, what should be medical services, what should be working space. आप ये समझ लीजिए बिल्डिंग जैसी होनी चाहिए. A lot इस बिल्डिंग में आप बैठे हैं तो शेड्यूल टी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, पानी सही आ रहा है, वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं, लोकेशन कहाँ है, सड़क के किनारे तो नहीं है, ऑल क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, तो ऑल इक्विपमेंट क्या होता है, बैच बन सकती रिकॉर्ड है कि नहीं, सारी कागजी बातें जितनी हो सकती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रिकॉर्ड को लेके. दिस ऑल टॉक्स अबाउट द पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल टी. हैव टू पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2. बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन मुझे तो कुछ डिलीवर करना है इसलिए मैं बोलता हूँ. Part 2 is talks about the instrument. Instrument में we all understand कि अगर if you turn the pharmacopoeia, I'm not the person to talk about, but if you see the classics also, there are roughly 20 to 25 dosage forms are mostly in practice. ऐसे तो बहुत सारी dosage form है. Even we have अभी हम वर्क कर रहे थे आहार पे, तो हमने तो बहुत सारी more than 50 categories निकाल रखी हैं, which we taken as a food, and that categories are different. But in practice, if you talk, mostly 25, around 25 dosage forms are being used. So for those dosage forms, it is powder, it is a pupipa, it is a kadha, it is a aso, it is a arrest. For all those specifications, what should be space? What should be instrument? That talks about part B. Part B talks about list of the machinery, equipment, minimum manufacturing premise, and what should be the minimum requirement. See, for establishment of any GMP certified ASU manufacturing unit, approximately more than 1200 square feet are required. 1200 square feet are required over and above. So these are the minimum requirement. So what I would be sharing or the slides we are sharing, these are the minimum requirement for any procedure. You see, list of the equipment. These are the bare. ये सारी चीजें हैं. थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ नया नहीं इसमें बताने लायक है. थोड़ा दिमाग से, थोड़ा मुझे थोड़ी देर देखते रहिए, स्लाइड को देखते रहिए. दिस ऑल इज अवेलेबल इन एक्ट. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सब दिया. So this is all talks about. देखिए majority of the space requirement is 100 square feet. Only the things like powdering, only the storage, like that only require 200 square feet. So roughly
Majority is 100 square feet. Some are 200 square. Intermediary 150 square feet are for that, like cookie puff and all that. That is a very small requirement. So this in total goes 200, 1200 square feet requirement with a separate cabin and separate demarcation. This is probably repetition was right. Similarly, what happened? Schedule TGMP, which is inclusive, it was a contribution of PLM and PCM, and those time it was made, the regulation started those time for the schedule TA, that is the schedule TA for the carbo mineral or carbometallic. This also talks about not more than each and every category. For this, we have made 1500 square feet. But again, majority is 200 square feet or 100 square feet. This is all the divisions. And if I talk about in a nutshell, if I talk about the more focus, the 5 P's. The 5 P's are very important when you talk about the GMP. That what P stands for all people, premises, product, procedure, and the processes. The this is the people should be educated. People should have the follow the procedure, follow the instruction, fully trained. GMP all talks about the people. When you talk about the GMP says you want premise and equipment, they are the validated. Definitely, instrument has to be validated. Absolutely, if it's not validated, it can't be done. Similarly, designated for the effectiveness clearing. This all talks and ultimate. I have made the product in a bit. Product ultimate 4P goes back to the product. All exercise, all efficiency have to be made for the product. That product comes in a market must go through thorough. If, if I concise for the rules, golden rules of the GMP, what should be golden rules? What we should follow? What is the golden rules? Get facility designed like that. होता क्या है कि हमको कमरा इतना बड़ा कमरा मिल गया वन फाइन डे आई गॉट दिस थिंग एक दिन मुझे सपना आया मुझे आयुष की बहुत मांग है हम बना लेते हैं वी मेक अ फार्मेसी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बहुत सारे लाइसेंस भी मिल ही जाते हैं बट इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश योर फार्मेसी इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश ए GMP compliant pharmacy you should design right from the starting when you are going to the idea you conceive you must have proper design otherwise there are other things mix-ups and cross contamination come when you go and also you will face the regulatory hurdles. So this is for when you start the thinking, when you dream, you have the dream, you have the dream, then start from right from the designing of that. And designing definitely you must have the designated for that. Validate the process. The process is yes, the processes if you are making even making the classicals or you are making PRP medicines. Many of you must be knowing how the difference between anatomy and you must when you are going for all these processes, even for your own product or for the because the classics were written thousand years back. The yeah, when the parenting, I always say when the parenting is challenging, DNA fingerprinting comes in there. Why not your classics? How it could be done, how it could be seen like that. Yes, what is written is correct. Yes, majority of things are correct, but those are those times written when there was no science at all. So we have to be very choosy. We have to be very clear what the processes we are adopting just must be validated and how much it is relevant in current scenario also. It is for the classical. Similarly, when you are making your P product, your own product definitely all the things. And you must identify. You must that this is the main. What do who does what? Everybody. I am a being Shastri. I want yeah, बराबर तो nobody is there in. I know everything. मैंने 4 किताबें पढ़ी. No, let the chemistry people will come, let the botany people will come, let the Ayurveda people come. And that is the currently requirement also. Let the people should be amalgamated to work on. So that's I am not master. जिस दिन हमने ये सोचा कि हम GMP की कंपनी बना के मैं एक रस शास्त्र समझ वी आर लॉस्ट बहुत सारी चीजें हम उस स्कूल में ही नहीं गए तो हम उसकी बातें कैसे कर सकते हैं so that is required कि everybody roles and responsibility must be clear and must be identified and train the developers for training is a regular feature GMP के provisions so there is a provision for the training एक बार पढ़ लिया चरक में जो कह दिया वो सिद्ध हो गया उसके बाद हमने पढ़ाई नहीं this is not should be done you require all regular trainings and all this thing time to time that is why CGMP anybody know what is the CGMP concept came current GMP because GMP requirements are evolving ever evolving तो GMP की जो basic requirement है उसके बाद this is always event that's why the
CGMP concept. Now the pharma industry talk about CGMP. What current change are coming? What they are making visible changes in the basic of the, not in the basic other part of the GMP. That is CGMP. Similarly, you have to incorporate all those changes, view the quality in whole product life cycle. Product life cycle. This is the golden rule. Product life cycle starts right from the raw material, and its GMP should be observed right from the raw materials up to the end of the cycle that goes to the consumer end, and is not only up to you but the consumer end. But unfortunately, unintentionally, or what you call many for unfortunate, it is not being followed in our own system in 100%. Inadequate follow. I should not put not being inadequately be followed. We don't have so far, to best of my understanding, vendor validation we have not done so far. The raw material comes from the source we don't know. Either it is from the forest or it is from the collected. Haribol is the best source. You go, you purchase anything you can purchase. And when the satis is also coming, you never know what the product you are getting. And even you don't have you can't validate. You ask for the any drug which comes in the satis, you can get it in Haribol. You ask for the chirata, you will get the tons of the chirata. But if you want the certificate, it's not done. You can't get it. So this is again big challenge. And when the entire we are living in an environment which is drastically affecting our life cycle. Similarly, it is fauna and flora is being affected. Then how is it feasible? How is it feasible? The entire the cycle is being we are ensuring. When the raw material is basically we all understand raw material itself is contaminated, itself is not up to the mark, then the product life cycle is spoiled. Whatever you do, your product will fail. We, during a short duration of my journey, I had been designated as an inspector for Ayush also. So I had been visiting all DTS, private details especially. So I have come across so many faults, how the products are coming and how the products are being made and how the products are being certified. In absence of the clear-cut written procedures, clear-cut our own wisdom, it is very difficult. The entire life cycle GMP is followed. The moment it is lost, your product will be lost, and entire credential of the system gets lost. So we as a technical person, we being a custodian, extent possible. I say word extent possible, we should ensure that these things are being observed when we are in pharmacy. Regular order. This is all the understand. In very quick form, if I see the summary, if we talk about summary, what GMP talks, it is a complex and how. Definitely it is complex, not very complex, but it is complex. One has to validate the processes, one has to write the processes, one has to observe things. Wide regulatory requirements. Regulatory requirements क्या हो सकती हैं? If you see, anybody could tell me what the regulatory requirements of our ASU products other than Drug and Cosmetic Act. मुझे 2 मिनट दीजिए कुछ बताए मैं पानी भी पी लूँ मेरा भी काम मुझे आयुष प्रोडक्ट पे कौन कौन से रेगुलेटरी प्रोविजन करते हैं आप बताइए सर कुछ और लोगों को बताइए मुझे भी बताइए मैं मास्टर हूँ बेसिकली माइक सर माइक ही फॉलो किया जाता है और रिक्वायरमेंट जो कुछ हमारे यहाँ लिटरेचर कुछ जैसे हमारे यहाँ एक आयुर्वेदिक कॉलेज और एक होम्योपैथी कॉलेज है तो वहाँ के फैकल्टी से हम लोग कुछ रेफरेंसेस लेते हैं जो कंपनी वाले कुछ प्रोडक्ट का बनाने के लिए आते हैं तो उनका जो मेथड रहता है वो मेथड को सर हम लोग कॉलेज के फैकल्टी से वेरीफाई करवाते हैं उसके बाद यदि वो देते हैं कि उसका लिटरेचर है या कहीं पे उसका मेथड इस्टेब्लिश है तभी हम लोग परमिशन देते हैं और नहीं तो फिर कहीं से उनको परमिशन लाने के लिए तो जनरली अगर स्टेबिलिटी है डेटा लेते हैं स्टेबिलिटी का डेटा लेते हैं डेटा तो सर जो देते हैं उसी को मान लेते हैं क्योंकि हम लोग जैसे नए प्रोविजन में वो बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि हमने स्टेबिलिटी डेटा मान रखा है लेकिन वो आपकी वही है कि आज के डेट में वो आप many of you must be understanding I always talk the people talk about the stability data especially I am talking about the classical medicine and PRP medicine stability data किसका purview I always talk in my people stability data या shelf life is the purview of manufacturer अब होता क्या है कि हमने कहीं कहीं से चीजों को इकट्ठा कर लिया I collected this ingredient I collected this ingredient I make a PRP product say for the liver
say for the brain tonic, I developed some product. And what is written for the syrup, I gave shelf life of both. Or we are ignorant about what actually is happening between your formulation. Either I'm not talking about the effectiveness of the product. I'm simply talking about the self life stability data. वो stability data भी नहीं clear हो पाता. So one, I will my understanding. I can request, but my understanding is we should be very cautious when we are talking about the stability data. Stability data we are talking, we never work on those things. Anyway, this instant GMP gives you thorough manufacturing processes. और मेरी तो बहुत ज़्यादा सक्सेस इन चीज़ों के बहुत सारे लोग मैकेनिक के लोग मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है सर स्टेबिलिटी डेटा इज ए मैन्युफैक्चर मैंने अगर रेगुलेशन में भी डाल दी तो उसकी स्टेबिलिटी डेटा इतना होना चाहिए प्रोडक्ट को मीट जो मुझे लगता है आप लोग बताए मुझे भी आपको रोहन से बताइए स्टेबिलिटी से सर अदर साइड में तो यही होता है ना मैन्युफैक्चरर देता है मैन्युफैक्चरर देगा नॉट ऑन बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव अपडेटेड इन आउट वो उनकी जिम्मेदारी लाइसेंस के साथ तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बुकिश न होकर ट्रू सेंस में तो वो तो हमारे पर डेफिनेटली वो परव्यू में है ही नहीं वो तो आपने किस क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया आपने क्या क्या चेंजेस किए दैट गोस टू यू यू हैव टू प्ले एंड आई हैव टू वेरीफाई तो जीएमपी में तो बहुत बड़ा है आई ट्राई टू गिव यू वेरी क्विकली दो तीन चीजें हैं कि बी एश्योर while following GMP कि क्वालिटी सिस्टम इज इंटैक्ट क्वालिटी सिस्टम में क्या है कि स्टैंडर्ड्स क्या है क्या स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिकेशन में कंट्रोल हो क्यों हो कि प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली एज पर देयर इंटेंडेड एक बार बना दिया यू कैन सी many of our grandmother and mother many people like 10 or 50 or 20 comes in our family आपके घर में भी होता होगा mother usually talks बात करते रहते हैं इधर से डाला मसाला डाला इधर से डाल डालो वो मेजर करके कभी नहीं डालते कि 250 या 260 ml दाल में पानी डालना है 100 ग्राम दाल डालनी है they do like that so they have standardized their concept they have made their SOP they made SOP और वो SOP उनकी एक हैबिट में उनको मालूम है कि इतने पानी डालने में इतनी दाल डालने में इतने नमक डालने में इतना टर्मरिक डालने में प्रोडक्ट विल गुड एंड दैट प्रोडक्ट मीट्स द स्पेसिफिकेशन तो ऐसा नहीं होता कि हर दिन घरों की सब्जियां या दाल खराब हमारी वाइफ हो सकता है बट माई ग्रैंड मदर्स एंड माई मदर डू लाइक दैट ओनली कि वो उसने स्टैंडर्डाइज कर रखा है प्रोडक्ट को कि बार बार वो इंटेंडेड यूज दाल खाने के लिए जो बनती है उसी पर बनती है तो सिमिलरली इफ योर एसओपीज आर क्लियर you have standardized your processes you have followed the written instructions you have followed your this thing you have validated your process आपने बार बार बना के उसको वैलिडेट किया है then the product will meet the specification and that is specification is GMP तो GMP में आप अब वो देखते रहे कि आपका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा टेम्परेचर नहीं होगा ह्यूमिडिटी नहीं सही होगी तो क्या होगा फर्मेंटेशन में प्रॉब्लम सिमिलरली ऑल दिस थिंग्स हैपन वेंटिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा so this GMP all talks about all these things which has to be done so definitely पर्सनल पे भी कह रखा है रिकॉल पे भी कह रखा है पर्सनल रिकॉल हमारे यहाँ इस प्रोडक्ट पे बहुत कम होता है वेरी रेयरली वी से द प्रोडक्ट रिकॉल हम शायद जानते हैं बहुत सारे रिकॉल क्या होता है प्रोडक्ट गया मार्केट में कंप्लेन आई आपने रिकॉल कर लिया कंप्लेन क्यों है कि स्मॉल ग्रुप तो रिकॉल्स की भी प्रोविजन है नॉट बीइंग फॉलोड इन आवर जीएमपी इट इज इन being followed partially inadequately but it has to be done many big companies do like that some product fails to meet the requirements in a wider population then the company rebacks its own product so this all has to be done definitely your health needs to be checked आपकी हेल्थ चेक होनी चाहिए रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए विजिट इवन द फैसिलिटीज इज सपोज टू बी ट्वाइस जीएमपी को इंश्योर करने के लिए इंस्पेक्टर हैज टू विजिट द मैन्युफैक्चरिंग ट्वाइस अ ईयर ट्वाइस अ ईयर ट्वाइस अ ईयर फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या की when the government observed yes it is not then they bring the third party that was a QCI they made a scheme for the
quality council, they wrote in Quality Council of India. Yes, so making more transparent, making things more, bringing more quality in the matter. So the voluntary scheme was done. You must be knowing Ayush standard. These schemes were launched by the UCI with the support of the government of India. Of Ayush. That time it was Department of Ayush. They also ensure how the GMP plus वो है ना दिल मांगे मोर तो GMP के बाद और क्या देख सकते हो so that QCI standard and the premium standard talks about the domestic requirement and premium talks about the international requirement. इस कंपनी में एक्सपोर्ट होगा तो वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट क्योंकि the safety and efficacy could come later but the safety is a preamble. When you make a product, you follow the GMP, you prime aim is it should be safe. Until it is not safe, I will not use any product, whatsoever kind it is effective. What is happening to us? What Minimeta is doing? Similarly, Minimeta is doing what? That is saying, convention is saying, no, you can't use the mercury. We always claim mercury is safe. So once you prove it, it is a safe. You prove it safe. So this is happening. Similarly, this all has to be done if you follow the GMP into this thing, it will work. Anyway, we go for WHO GMP certification scheme. किसी को कोई आइडिया GMP के बारे WHO GMP के बारे में एनी आइडिया इधर से ये था क्या कब आया क्यों आया एक तो मैंने दे दिया लीड की यही जहाँ मैं बैठा हूँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ ये यहीं से शुरू हुआ लॉन्ग द मिनिस्ट्री के डिस्कशन पे जिसका इन अपने अपने कंट्री की बात कर रहा हूँ GMP जो हमारे इलाके शुरू तो ये बहुत पहले हो गया शुरू तो ये वर्ल्ड हेल्थ जो सिस्टम है वर्ल्ड हेल्थ WHO के बाद जो वर्ल्ड हेल्थ समिट होती है तो वहाँ 191 कंपनीज मेंबर स्टेट्स मेक अ सोल्यूशन yes the product which is an international commerce कोई भी जो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट इंटरनेशनल कॉमर्स में जा रहा है उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए must be some specification and scheme and guidelines could be made what was the purpose of those that the purpose was say the developing countries are there and there are the entire world developing, developed, and underdeveloped. So the we divide entire globe into three. Some are the developed countries, some are the developing countries, and some are underdeveloped. It could be a matter of debate whether we are coming developing or underdeveloped or developed. I'm not doing that. So what happened? The developed country used to fall down. Basically, entire game happens like this. I am a manufacturer. I am making this mobile, my property. I will sell at a higher cost to the people like you, where it is not being manufactured. Similarly, things happen like to the products were being exported to the other countries also, to the certain extent underdeveloping and underdeveloping. So the products were being exported. So say I am a developed country A. I am exporting some product to country Z or X, and you are not also developed country B. And you are also exporting the country to Z. So I will follow my own country's laws. I will follow my own regulations. I will follow my own investment. And being he or she being a country, we will follow some own ways. One was reason that there will be difference in the standard. एक स्टैंडर्ड एक कंट्री का जो स्टैंडर्ड होगा वो दूसरी कंट्री का स्टैंडर्ड नहीं होगा जो एक्सपोर्ट कर रहा है आई एम एक्सपोर्टिंग टू कंट्री सम अदर जेड और एक्स कंट्री so the standards will be changed. Another what was happening, the developed country used to power down their substandard product to the underdeveloped country. आप देखते हैं आज भी कई जगह पे आपको 100 रुपए की शर्ट मिल जाती है आप देखें अगर इसको जनरलाइज करें 100 रुपए की शर्ट आपको मिल जाती है और आप एक स्टोर में जाते हैं तो एक 500 से नीचे शर्ट मुझे लगता है मिनिमम 1000 रुपए से नीचे शर्ट नहीं मिलती तो 100 रुपए वाली शर्ट कैसे आती है क्वेश्चन वो भी उसी का दिखती है तो वही है कि जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उन सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को डेवलप्ड कंट्री यूज टू पावर डाउन दोस कंट्रीज who are importing it, who are under development, and that सब इस प्रोसेस को रोकने के लिए making the uniformity in the export, making the uniformity in the product specification, product standards in the export, and also making checking the substandard product in the commerce in the other countries. This scheme was launched. This scheme was launched for the purpose. Next.
The first, this is all history. The first WHO GMP draft 68 में आया, then World Health Assembly ने इसको 69 में इसको approve किया गया, and the first WHO certification scheme pharmaceutical product के रूप में global market में आई. So this is a history. और as of now more than 100, आपको मुझे लगता है कि अगर साइड को भी मिलाएंगे तो more than 200 or more, even more companies, हमें उनके बारे में आइडिया नहीं, लेकिन हमारे बारे में आइडिया है कि we have at least 30 companies who are having WHO GMP COPP certification. When we talk WHO GMP, two words very quickly come: WHO GMP and COPP. Anybody knows COPP? What is COPP? Certification of pharmaceutical product. Anybody? चलिए next. So this ये इसलिए this scheme was launched and those signatories थे, जो इसके signatories थे, it was expected from them the standards, the 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 guidelines developed by the WHO would be equally followed by all the member states, and the product certified under the GMP would be valid for the intake in those countries who are the signatories of the WHO scheme. Next. If you see, yes, the products are moving from across. I have tried to bring an Indian. Yes, we are exporting products to certain parts of southern part of America, another part, and different. So just to make the export more easier on a standard defined norm, even the countries are insisting for EU GMP. What I was talking, EU GMP. The people are the countries that come up with no. I will want EU GMP. I will only import those products which qualify the criteria of EU GMP, European GMP. That GMP is exclusively being mandated for the EU countries, European countries, and in the true sense, they are. Next, please. Yes, basic principle of WHO GMP, similar what I am talking is similar to any GMP requirement. What I said, that is civil M, CRF, Asian GMP, these are mostly nature. If you see in our context, particularly the herbal products, I am talking about the WHO GMP COPP certification scheme. It is for the both sides, synthetic drug also, but my discussion, my sharing will be around herbal products. WHO has given, it is already on available website. You go to website WHO guidelines for herbal products. It's available. So they have given certain guidelines. That guidelines has to be observed. When manufacturing, and that guidelines are basically based on M or any Asian GMP or CRF. So that not civil T but civil M, that is more faster. Following any GMP procedure, we automatically understand. So the provisions are very common. Validation, उसमें भी validation आएगा, उसमें भी safety आएगा, उसमें भी supply आएगा, उसमें भी validation चीजें ज़्यादा आएंगी. So this all has to be observed when we are opting for WHO GMP. WHO GMP developed considering various GMP aspects and requirement of the developing country. This has also been made done. The guidelines which have been made, it has also been made like that. What are the requirements of developing countries? Because the system started of WHO for bringing the uniformity for the products, not only limited to importing, exporting country, but also for the purpose of import. So requirements say my storage capacity will be, I am underdeveloped country. My storage capacity will be not as good as what is required to be. So all that aspect has been taken care when designing and drafting the guidelines. And these requirements may or not for the domestic use, but for international use. If you want to do, yes, if you want to make your product in WHO, it is fine enough, but it is a costly affair. It is a very costly affair. To best of my understanding, to establish any WHO GMP compliant pharmacy or promoting your own GMP to WHO GMP compliant pharmacy, it requires more than 40 CR. 40 करोड़ से कम हो सकता है, 30 से 40, 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, more than 30 to 40 crores rupees. It is tough to follow the GMP guidelines. Not achievable, it is achievable, but it's tough. GMP, what WHO? GMP, why GMP was ensuring the quality system, and its basic two remains
and they're the same. Avoidance of the cross contamination and prevention of the mix-ups. Anybody could say what is the difference between cross contamination and mix-up? कोई मुझे बताए, ऐसे ही चर्चा करें. हमारे प्रधानमंत्री चाय पे चर्चा करते हैं, हम पानी पे कर लें. हाँ, मिक्सअप में नहीं, मिक्सअप में तो एक प्रोडक्ट सही बताइए, आप ही तो पता है, मुझे नहीं मालूम. मैं तो कॉपी पेस्ट का आदमी हूँ, इधर तो कॉपी के इधर है. दैट इज दैट इज दैट इज क्रॉस कंटामिनेशन. मिले अटेंशन टू सब्स्टिट्यूट, यहाँ तक तो वहाँ शुरू तो सही के बाद में कैसे लगता है. मिक्सअप कुड बी टू डिफरेंट पार्टीज. आपने मिला दिया, दो मोबाइल मिला दिया, एक एप्पल का मिला दिया, एक सैमसंग का मिला दिया. कंटामिनेशन जो होता है ना, क्रॉस कंटामिनेशन. एक आप मीट बना रहे हैं, आप पैरासीटामॉल बना रहे हैं, काढ़ा बना रहे हैं, एक काढ़े से दूसरे काढ़े में. इट इज ए contaminating anything. One thing is being made, it is crossing and contaminating. Mixup could be two different articles. Mixup is a mixing. It's two different. So basically, WHO GFP ensures the avoidance of the cross contamination and the mixup. Additionally, क्या है, तीन चार चीजें वो जरूर करता है. ट्रेसिबिलिटी, आपने प्रोडक्ट की पूरी जो हिस्ट्री और ट्रेसिबिलिटी करने की कोशिश करता है WHO GFP की. ट्रेसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, जहां आपने कस्टमर एंड तक गया. अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एक्शन, हु हैज व्हाट, ये इट शुड बी रिटन. अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है कि प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में responsibility, one has to be responsible. This basically avoidance of the cross contamination and mix up in additionally, and also the product performance guarantee. ये बहुत बड़ा वर्ड, यहाँ हम कई बार इसमें रुक जाते हैं. तो जहाँ हम इसको कहते कहते हैं कि पुरुषम विक्स कह के हम निकल जाते हैं. ये प्रोडक्ट हमारा इस आदमी पर हमारी प्रभावती शुगर को कम तो कर देगी, किसी में कर देगी, किसी में नहीं करेगी, किसी में यूटीआई में काम करेगी, किसी में नहीं करेगी. बट WHO एम्स ही कहूँगा कि प्रोडक्ट परफॉर्मेंस गारंटी कि अगर ये प्रोडक्ट इन चीज़ों से बना है, इन प्रोसीजर से बना है, तो इसकी परफॉर्मेंस. दो इट टॉक्स लेस अबाउट द क्लिनिकल साइड. ये बड़ी अमेजिंग और इम्पोर्टेंट बात है कि क्लिनिकल्स की जो आपके ट्रायल्स की जो रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट वेरी मच एक्सटेंडेड. बेसिकली WHO फोकसेस ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. जो फोकस है, वो फोकस वहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए. We will discuss in later slide also. So this is aim primarily decreasing the risk in फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की. जो भी आपका प्रोडक्ट है, रिस्क इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में जो रिस्क आ रहा है, क्रॉस कंटामिनेशन है, मिक्सअप है, खराब हो गया प्रोडक्ट, डिस्क्वालीफाई कर गया, ये WHO टॉक्स बेसिकली ऑन इट. इट आल्सो इंश्योर्स कि इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस गारंटी है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ दोज दैट टॉक्स अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल. So this is the beauty of this scheme. Next, if we want to understand the GMP, ये technical report series, WHO has given some guidelines. They are called TRS, technical report series है. Each report, each series, TRS 820, 363, 834, these are the numbers. These all are available. लिखने की कोई जरूरत नहीं. WHO साइट पे जाइए, TRS वर्ड आइए, सब आ जाए. ये अवेलेबल है जनरल पब्लिक. तो these all TRS talks about the different. कोई वैलिडेशन की बात करता है, कोई क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है, कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करता है. These all series talks and it has to be implemented. और believe me, I am not expert. When we were doing, एक एक सीरीज पे दो दो दिन का लेक्चर आपको सुनना चाहिए या किया जा सकता है. अर्लियर Mr. Kukurati was there in DCGI officer Jansen. He has been part of our team. Malay Mishra was part of team. ये सारे लोग, they used to talk validation. अब validation की एक सीरीज पूरी है. Then we have to talk what has to be outward. मैं तो आपको खाली टच करा रहा हूँ, निकलता जा रहा हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन you have a good idea. Each series needs to be discussed and needs to be deliberated if you wish to establish your unit for a particular this WHO GMP. Next.
These documents I said available on WHO, freely available for users. Website is the best source. Don't go for the website. Go for website. However, the other established regulatory agencies can expand the knowledge and expand. मैंने जैसे कहा ना कि रेगुलेटरी अभी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं. वन आई थिंक वन शेयर स्लाइड में कहीं होगा कि who could be the licensing authority. We could come later. Who could be WHO licensing authority and why? हमारे यहाँ तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, स्टेट देंगे. This is the concurrent list. Health is the concurrent list. SLA is the picture designated, or the model site, or the teacher, or the licensing thing. SLA comes in the picture. But who will be WHO को कौन लाइसेंस देता? सीडीएससी. Why CDSO? मैं इसको पूछने के लिए मैंने पूछा CDSO क्यों देता, क्यों नहीं हम देते? The reason behind the reason behind the WHO scheme says National Regulatory Authority. The license WHO certification scheme custodian will be National Regulatory Authority (NRA). For any country, there will be only one, that will be DCGI. CDSCO whatever is talking about. It is a DCGI who issued the license for WHO certification scheme. Now the question arises other side. हमारी पूरी जिंदगी कंपेरेटिव रहती है. मॉडर्न क्या कहता है, हम नहीं करते रहते. तो उसमें क्या है कि उनकी साइड में क्या होता है, उनके यहाँ तो हजार सैकड़ों कंपनी है. व्हाट दे डू, their state unit, their state offices, they have been designated on the behalf of the CDS. They issue the license on the behalf of CDS. Contrary to us, where the CDS centrally we are giving the license centrally. But at the other side, synthetic side, their state bodies on behalf of CDSU, they are giving the license. कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ ज्वाइंटली अभी आ रहा हूँ. नहीं ज्वाइंटली नहीं, स्टेट लाइसेंस मैं अभी बता रहा हूँ. अभी आ रहा हूँ. ज्वाइंटली नहीं होता, ज्वाइंटली नहीं, ये तो कंपनी में ज्वाइंटली नहीं होता है. आप विजिटेशन के पार्ट एक टीम बनती है. मैं बता रहा हूँ क्या रहा हूँ, वो टीम है. बिकॉज वाई यू आर द टीम, बताइए. हमारे स्टेट के पार्ट होते हैं. Because the reason the unit is a neuro state. How people sitting in the center could say कि ये GMP holder है. So you are the person who talks about the GMP. You have given the GMP license to the manufacturer. That by the state government, and as per the scheme, as per this joint visit, अभी आएंगे state joint visit has to be made, and that will be state licensing authority, one designated or inspector of the Ayush, and one the DCGI. So they go for the visit. So, but the license again, I will come on the point. License is only being given by the National Regulatory Authority. Currently, for those, it is only central government. CDSO headquarters is issuing the license. But for the synthetic drugs, their states are also issuing the license on behalf of central government. तो अभी हमारा स्टेट जो स्कीम जब डेवलप हुई थी 2000 समथिंग अराउंड 2000 प्लान अराउंड 14 करेक्ट 2010 से 14-13 के बीच पहले शुरू हुई थी चरक से, हिमालय में चरक का फाइनल. तो उस समय हुई थी. तो इस समय यही डिजाइन किया गया था दैट दे वंस इट इज स्टेट फॉर विजिटेड इट विल बी सेम प्रोसेस. बट टिल 10 साल हो गए, बहुत सारा पानी बह गया, आज तक वो हुआ नहीं. टिल द CDSC is still the license, and this is the best source you can go because what the requirements are there and WHO guide. Yes, these are the certain certificates that are quite important when we talk about the COPP, WHO, GMP, product certificate. What is COPP? Certificate of pharmaceutical product. That again 823 सब में देखिए, तीनों में सारी गाइडलाइंस कॉमन है. मतलब ये तीनों गाइडलाइन में प्रोडक्ट सर्टिफिकेट, statement of licensing status, and batch certificate. They are the all are appearing in this guideline. There is another certificate called site certification. We will describe later. तो ये सारी सर्टिफिकेट हैं. So these are the certificates. These are the certificates are important.
one very quite interesting difference there is between the license issued of under the COPP WSO certification and our own GMP. Anybody could say, आप बताइए, आप ही को मैं पकड़ूंगा क्योंकि आप अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं पूछ मेरा ये मतलब नहीं है कि आपका कोई एग्जाम दूं, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, पहले मेरा सिलेबस ना किसी को हैरेस करने का, हमारा तो कि लोगों के अंदर कंपैरिजन जितना ज्यादा होगा उतना शायद मेरे आने का ये देखी इसकी जानकारी ये नहीं है कि हमारे यहाँ एक क्लास एक ग्रुप को हम देते हैं, आसो को लाइसेंस देते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट को लाइसेंस नहीं देते हैं। आसो को ग्रुप आप लोग देते होंगे, आसो को दिया दिया 5 आसो, ठीक है, प्रोडक्ट आप मांगते हैं, मांगने लगे आपने, लेकिन आप एक ग्रुप को दे देते हैं। अभी हमने 15 दिखाता को ज्यादा हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल ड्रिंकिंग बोर्ड लाइसेंस कॉस्मेटिक के लिए दे रहे हैं 158 भी के अंदर, तो हम भी वहाँ क्या करें प्रोडक्ट बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन COPP टॉप से बहुत सिंगल प्रोडक्ट, अगर आपको तुम्हारी आसो का लाइसेंस मिलेगा तो तुम्हारी आसो का लाइसेंस, आपको सारे आसो का लाइसेंस मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी। कहाँ हम ग्रुप को देते हैं लाइसेंस, कहाँ हम प्रोडक्ट को देते हैं। यहाँ 5 साल है, यहाँ 5 साल है, यहाँ 2 साल तक शायद 3 होंगे कि 2 COPP का 2 है। It started with 2, it was in process of making 3, 2 साल में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, initially started for 2, I have spent 10 or 12 WSO विजिट करने की, तब तक तो 2 ही था, तो ये स्टार्टेड, यहाँ टाइम ड्यूरेशन कम, और WSO GMP जो है इस साइज सर्टिफिकेट, इस सर्टिफाइड द साइज, इस साइज जो आप जहाँ पे आप बना रहे हैं, इस सर्टिफाइड द साइज। COPP is the product wise certification that is given to the product. Next. Next. The the member states usually WHO जब बात करता है ना, we understand कि member state कहता है, country कहने पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। The member state or country shall ensure the following condition of manufacturer if required to attest the product for certification. Specific product is authorized to be planned in the market for exporting. If not, why not? Manufacturing price subject to regular inspection of WHO compliance. All product information including measurement country occurring in a certified country. मतलब क्या हुआ कि जो एक तो नेशनल जो अथॉरिटी है, जो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो देखती है, वो इंश्योर करती है, ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया और आपको मिल गया, वो इंश्योर करती है क्या कि स्पेसिफिक जो मार्केट में प्लेस करना है, why you want to place the product in the market, number one, and that your unit is regularly inspected or not. वहाँ क्या है कि रेगुलर इंस्पेक्शन होता है WHO कंप्लायंस के लिए कि नहीं, एंड ऑल लेवल इज प्राइवेट। देखिए हमारे यहाँ लेवल का आप तो लेवल मांगते होंगे, अब मांगना शुरू किया, पहले तो शायद को भी नहीं मांगते, अब तो लेवल के भी अप्रूवल प्रायर, अब आप भी लेते हैं अपने यहाँ शेड्यूल टी में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पूरे पैकिंग मटेरियल से लेकर लेवल सबकी प्रायर अप्रूवल भी टेक लेवल। नेक्स्ट condition to be satisfied before opting the scheme by the any member country. India has responsible effective national licensing system. इम्पोर्टेंट है कि आपका सिस्टम है कि नहीं, अगर आपका नेशनल लाइसेंसिंग सिस्टम है ही नहीं, जो मैंने कहा नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है ही नहीं, then you can't take a license, you must have a license, like DCGI is there and we have effective control of quality of the product, independent laboratory lab है कि नहीं आपके पास टेस्टिंग के लिए, technically competent लोग हैं, experienced लोग हैं, these are the requirements. Until you have administrative capacity to issue the certificate, quickly notify. Look, this is important. Administrative capacity. Who will be the administrative capacity? DCGI. So whether you have the provision of our office, if you don't have the provision of DCGI or National Regulatory Authority, you can't issue the certificate, and simultaneously you have to quickly notify the WSO. Next. These very quickly. कुछ बोरिंग हो रहा है ना? नहीं लग रहा है? नहीं मैडम आपको है ही नहीं कि आपको कहेंगे अच्छा लग रहा है, तुमसे पूछना है, सर भी कहेंगे बहुत अच्छा है, चलने को मजा नहीं आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है थोड़े पता चला जाऊँ थोड़ी मुझे अच्छा कहेंगे तो भी। WHO का मोटा मोटी ये कहानी की सारी सीरीज है, देखिए जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट 820, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में रख लीजिए, कभी गूगल करिएगा सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन वही है, सब निकल आएगा। WHO साइट पे जाएंगे,
823 है वो, it talks all about the quality, quality assurance, GMP, quality control, standardization, validation, ये पूरी पूरी चीज है, बहुत कुछ है। ना मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान समय हो भी गया तो ज्ञान तो मैं सब को डिफाइन कर सकूँ, सिर्फ इसमें समझिए सारे डिटेल्स हैं, then you can go next। इसके पार्ट वन है, एक सीरीज में क्या है, पार्ट वन है, प्रोडक्ट रिकॉल है, इक्विपमेंट है, एफएमआई है। वही जब जीएमपी आ गया तो उसमें इन्होंने ये सारी चीजों को दे रखा है। जीएमपी में स्टील क्या यूज करते हैं, कौन से ग्रेड का स्टील यूज करते हैं, एनीबॉडी पूछते मेरे को। 314, 16, 16 और 304, 304 भी होता है सर। हाँ 304 और 316 के अंदर क्या हो सकता है, इक्विपमेंट की बात है तो चलते बात करेंगे जरूर। दोनों की स्टील में दर क्वालिटी, एक से रस्टिंग कम होती है, मॉलबेडियम क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं मॉलबेडियम जो रस्टिंग को रोकता है, वो 316 में ज्यादा अच्छा होता है। तो एसएस ग्रेड की स्टील, मान नहीं बोलता एसएस ग्रेड की स्टील होनी चाहिए। और क्या है कि ये करोजन होते हैं ना, आप प्रोसेस से करते हैं तो क्लोरीन से बहुत करोजन होते हैं, तो 316 जो ग्रेड की स्टील है दैट इज वेरी गुड, ये करोजन को भी रुकती है, और क्लीनिंग प्रोसेस में जो रेडिएशन है उसको रोकती है। कुछ और जोड़े, हाँ वही 304 लेते हैं, अंदर वाले 316 लेते हैं। वो पर्पज एक तो क्या है कि फ्रोजन ना हो, रोस्टिंग ना हो, और क्लीनिंग में थोड़ा इजी है। लेकिन इसकी भी पार्ट भी है, तो गुड प्रैक्टिसेस क्या है वो जो हमारी जीएसटी वाली है ना, उसके बहुत सारे डिटेल्स इसमें है। सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस में भी ट्रायल, थोड़ी ट्रायल अभी हम बनाते नहीं, बिल्कुल बनाते जरूर है, लेकिन वो सारे ट्रायल की डोंट फॉलो। मॉडल फॉर्मेट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी डब्ल्यूएचओ में आपके सारे लाइसेंस के लिए एक फॉर्मेट भी, तो वो फॉर्मेट इस टीआरएस के लिए फॉर्मेट जो ये नहीं अपनी मर्जी से चल रहे, जो हमारे किसी ने बना दिया, किसी ने हिंदी में, किसी ने बंगाल में, किसी ने साउथ इंडियन में, नहीं, यहाँ आपको एक फॉर्मेट दिया गया, इससे ज्यादा नहीं लिखा। तो वो एक फॉर्मेट दिया, वो दिया है कि मॉडल फॉर्मेट ऑफ इशूइंग सीओपीसी एंड डब्ल्यूएचओ एजेंसी कुड बी सीन हियर। सिमिलरली 863 जैकेट गाइडलाइन, स्टेबिलिटी की गाइडलाइन, अब क्या कंट्रोल होगा, क्या पीपल आर एक्सपर्ट इन ऑल दीस लाइंस, क्या कंट्रोल होगा, क्या स्टेबिलिटी टेस्टिंग में रिक्वायरमेंट है, दिस ऑल रिक्वायरमेंट आर हियर इन सीआरएस 863 गाइडलाइन फॉर इंप्लीमेंटेशन के मॉडल सर्टिफिकेट के गाइडलाइन के इंपोर्ट के प्रोसीजर, इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या प्रोसीजर, दिस ऑल आर डिस्कस्ड। नेक्स्ट 902 अगेन द नेशनल कंट्रोल की क्या है, मेंबरशिप से क्या होगा, बेसिक एलिमेंट क्या होगा, डिफिनेशन भी बता दूंगा। So these all series talk about the different points and they have some salient feature, labels के बारे में, storage area के बारे में. This all has to be followed and will have to be gone through when you are opting for COPP, WCGMP. Similarly, 929 is there for आगे बढ़ेंगे. How to certify a product is important. वो series के तो सारे product certification and the after thorough examination of the product in the facility being manufactured. जिस जगह आप बना रहे हैं उसका thorough examination who will be doing, again the representative of the DCI or the national regulatory authority, what you call, again the state government which is the custodian of the GMP, again the expert from or the or the inspector from the Ministry of IoT. The three-member committee could more or less three other main components who will visit to the application. यहाँ application में अब activities requires 3 to 4 days. 9 months, 3 to 4 दिन में, right from the entry, right from the corridor up to the हम ETP का concept का हमारे यहाँ different हमारे GDP में शायद if I am correct. तो वो सारी चीजों को देखते हैं, वाटर के लेवल, पोर्टेबल वाटर कितना है, तो ऑल each and even board, mud, ceiling, fall ceiling, epoxy coating, all each and every part are being handled. We went first. I visited with Malay Mitraji to this thing, Himalaya. Himalaya visited first visit of Himalaya, where he got a WHO letter. There was some board was not in the QC lab. There some board was there. We took the picture. It was rejected. Then again after 6 months we went further. So company like Himalaya didn't qualify this individual. Company like Charak also didn't qualify this individual.
each and everything what it appears to be like, say it is blinking, say out of 5 or 6 tube light it is blinking. I'm going very general. Even that will be not allowed. Forget about the stability studies, forget about the product recall, forget about the training, forget about the regulation. These are the big terms. Forget about the your what do you call uh, other requirements. Basic requirements are also being seen, and facility definitely whether the facility has the provision to capture to get the COPP certification active. Pardon? Both product cycle we will product cycle we will where you are storing. Look, that's I'm not expert. I'm not chemistry. I'm basically I'm a Let me make a disclaimer. Batch is something what you make. Batch product certification total. Product means right from your packing, right from exactly everything about the product. So product certification, what is qualified, what is certified. Batch is what you are making the thing, whether it is qualifying those testing protocols and the parameters. To be it is simple. Vijay, is it correct? Batches usually qualify your SOPs. Your SOPs. SOP of manufacturing. That is what amount, what controls you are making. बैचेस आर डूइंग दैट ओनली ना बैच टू बैच वेरिएशन ऑफ द एक बैच में आपने बना दिया दोनों प्रोडक्ट अलग हो गए ना एक बार आपको देखते हैं हमारा खूब होता है कभी हमारा चौमप्रास गढ़ा होता है कभी हमारा जो मैं समझता हूँ वो प्रोडक्ट को वेरीफाई करता तो दैट दो प्रोडक्ट बिकम डिफिकल्ट हम ये सोचे कि एक बैच जो हमने बना दिया एक चौमप्रास बना दिया और क्या वही चौमप्रास हो तो डिफरेंट प्रोडक्ट टॉकिंग ऑफ द एक्सक्यूज मी सर सर सवाल नहीं बहुत सिंपल किसी का सर क्या बैच और उसके प्रोडक्ट्स का क्वालिटी का अलग डिफरेंस हो जाएगी डेफिनेटली डेफिनेटली भाई हमारे लिए तो है कि एक बार बना दिया गंधक शोधन कर दिया तो गंधक किसी ऐसे ही बनेगी या गंधक प्रोफेशन ऐसे होगा इफ इवन चेंज द टेम्परेचर बैच टू बैच वेरिएशन इसलिए भी कहा गया there may must not be any batch to batch variation particularly when we talk about the हमारे यहाँ से बन गया कभी आरोग्य वर्धनी 500 mg की बन जाती है कभी 250 दोनों चलता है बट व्हेन द एसओपी इज फॉलो फ्रॉम द रॉ मेटेरियल आप पहले अपना बताइए आपको आगे हैं आप बताइए कि रॉ मटेरियल कहाँ से कम करें बहुत सारी आप बना के आप अच्छी कंपनी जो हमारी कंपनियां उनसे भी देख सकते हैं बेस्ट वेरी करता है 100% आप बताइए यस इसीलिए है देखिए जो बेसिक रॉ मटेरियल की सर्टिफिकेशन जो रॉ मटेरियल जो सर्टिफाई करते हैं जो रॉ मटेरियल सर्टिफाई नहीं होता है क्लिनिक का जिस आजकल क्लीन का फूड चला है कर लोग ज़्यादा चल उसके लिए तो उसके लिए भी क्यों आ रहा है इशू इसलिए आ रहा है कि आप जो ट्रेनिंग के प्रोसेस को या जो स्टोरेज प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं दिस अगर आप बैच रिकॉर्ड रखते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है इस टेम्परेचर पे इस प्रेशर पे या ये डेफिनेटली देयर इज चांसेस आर लेस फॉर सर उसकी एक्सपायरी भी चेंज होगी एक्सपायरी भी सर उसकी चेंज होगी अगर मैं तो ये एक्सपायरी तो आपका परव्यू है मैं हमेशा कहता हूँ मैन्युफैक्चरर का परव्यू मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ जो शेल्फ लाइफ है या डेट ऑफ एक्सपायरी है ये मैन्युफैक्चरर का परव्यू है कभी रेगुलेशन में आ ही नहीं सकता रेगुलेशन में कभी आ ही नहीं सकता आप एक मशीन 6 तरीके से बताते हैं कैसे आप इंश्योर करें कि उसकी शेल्फ लाइफ है इट इज नेवर कम इन परव्यू ऑफ एनी रेगुलेटरी मेंशन तो सर मेंशन तो लेवल की रिक्वायरमेंट है कैरी मैन्युफैक्चर बैच वो तो सारे वो अलग है वो रूल्स के वो तो मैन्युफैक्चर मैंडेटरी है आपको मैंडेटरी तो है ही है कि आप मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपायरिंग का दुनिया भर की जो बिल्कुल इनमें तो अच्छा बताइए हाँ
अब मैंने क्या किया, मैंने चुप हो गया, मैं क्या किया, मैं अपने सिस्टम को ही नहीं बोल, मैं सर का चाय पी रहा हूँ, सर के खिलाफ कैसे बोल सकता, नहीं बोलूंगा, चुप रह जाऊंगा। क्योंकि सर जानते हैं ना कि जो आपने लिख दिया, मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया है स्टोरेज का, क्या प्रोसेस फॉलो किया है उसका, ओनस जाता है, ओनस में हमारी तो सेफ ड्रग है ना, इफेक्टिव नहीं होंगे। हमें लिबर्टी तो इसीलिए मिली है कि हमारी ड्रग सिंथेटिक ड्रग नहीं, लेट मी फिनिश इसी पॉइंट पे, आपकी पॉइंट पे फिर आप हमारी ड्रग सिंथेटिक ड्रग नहीं है, ठीक है, हमारी ड्रग सिंथेटिक ड्रग नहीं है, इसकी पोटेंसी उधर भी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है, उनकी पोटेंसी कम होती, अगर जिस दिन ये रिएक्ट करने लगे ना एक्सपायरी के बाद, फिर देखिए कैसे करते हैं, नहीं कर आरोप नहीं काम करेगा, ठीक है, कम काम करे उसी क्राइटेरिया में, हाँ बिल्कुल, यस, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बट हमारे यहाँ से हमारे appearance में कहाँ आता है? ये देखो, नहीं हमारे यहाँ कहाँ पे करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, हम नहीं करते, मतलब दिस शुड बी टेकन वेरी कॉशियसली, कम से कम जो, हाँ उसकी बात छोड़, हाँ अपीलेट, देखिए अपीलेट लैब विद ड्यू रिगार्ड, अपीलेट लैब एक ही होगी, अपीलेट लैब और हम ही है, अपीलेट लैब के पास कितने प्रोडक्ट आते हैं, विद विद ड्यू रिग्रेट एंड रिगार्ड, अपीलेट लैब पर कितनी टेस्टिंग आती है और कितनी फार्मेसी है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस और एटलीस्ट वन प्रोडक्ट ऑफ ऑल अपीलेट लैब, नेवर, ऑल लैब्स नेवर, लगभग अराउंड 8,000 फार्मेसीज हैं, 10 तो कम होंगी, 8, 8.5 होंगे, 8,500, कभी 9,000, 9,000 की क्या एक एक प्रोडक्ट कभी आया है, हमें तो मालूम ही नहीं हो पाता है कई बार कि कितनी फार्मेसी है, देन हाउ इज इट पॉसिबल, कभी अवले हमारा गाढ़ा होता है, कभी चौंपरास ले लीजिए, आप मार्केट कर, आप अच्छा बताएंगे, आप जो प्रोसीजर करते हैं कितने कंसिस्टेंसी कितनी चौंपरास की, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। So one must have the National Regulatory Authority who could go for the inspection. That the person must have the knowledge of GST, and the inspection 2 or 3 days will take or more days. Certificate are issuing authority on the recommendation of joint report. This is a joint report that will be submitted by the licensing authority of state, Ayush expert or Article expert from the Ministry of Ayush, and this thing, their own representative that CCI will issue the license. One last is important, it must have the valid surety limit. Until unless you don't have surety limit, you cannot get the license of WHO GMP certification scheme, because it is surety which talks about where it is being manufactured. These are the bare minimum standards which have to be followed. इंस्पेक्शन पॉइंट से वही बातें, क्वालिटी मैनेजमेंट, सैनिटेशन, वेरिफिकेशन, सेल्फ इंस्पेक्शन, पर्सनल, these are the inspection point what usually we used to go and we used to see. These are the points where we want to see how the quality management is ensured. Next, the GMP consists this various activities could be group training, cleaning, sanitation, validation, storage. These all we change control. These are important. Sometimes change control and self-inspection and all. Audits have been given more important here rather than in anywhere else, but less to EUGMP. So validation is probably lacking in us. वाला concept हमारे schedule EUGMP में नहीं, लेकिन WHO focus or make on 5 to 6 points which are available in rough number, but it has to be seen. Of certificate of product for import or export. Export could be copy paste, export could be product. Basically, one thing is more important is the last 2 words, herbal product. This is important. You cannot export as per existing provisions because it contains metals and minerals. Entire COPP, WHO, GMP, as of now, talks only about the herbal product.
Even the zinc is being used on the other side, the product having zinc cannot is not candidate for getting the certification. Even iron भी इन्होंने यूज करते हैं लॉ ऑफ so metals and mineral product containing cannot get the certification. Site master file. अब ये क्या है? Site master file एक तरह से जन्म कुंडली पूरा कहते हैं ना, अलग अलग जन्म कुंडली होती है, पूरा बता देती है कब क्या हुआ क्या हुआ क्या होगा. तो इससे साइट मास्टर फाइल है. यू हैव टू मेक एवरीथिंग. इट इज काइंड ऑफ डोसियर. ड्रग डोसियर के सब कुछ अपना बता दीजिए, साइट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सब के बारे में. Your site diagram, everything has to be written in site master file, and this has to be submitted. One copy submitted to DCGI office, one copy submitted to Ayush. Now, some people are only submitting Ayush, and it goes back to DCGI also. So, under the recommendation, the committee has to be constituted. That committee is constituted by the DCGI of Ayush, and this committee goes for inspection. And as per the checklist was drafted here. It has been improvised. PLM में बैठ के सभी चेकलिस्ट बनी थी, वो बहुत इम्प्रोवाइज हो गई है, वो चेकलिस्ट होती है. एंड दैट what I have to, I was talking to DCGI, state licensing authority, Ayush, that time in department में था. So this all go and they found suitable. DCGI issues the herbal product के लिए certification. So this was all about the WHO GMP, what I tried to fetch, जो मैं चोरी करके ले आ पाया. एक चलते चलते लास्ट स्लाइड बट नॉट लीस्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. EU GMP एंड WHO GMP. अभी तो हमारे लिए, आई एम सॉरी टू से, नन ऑफ द इंडियन कंपनीज आर हैविंग EU पर्टिकुलर अस. उनकी बात नहीं करते साइंटिफिक साइड की. हमारे साइड की किसी कंपनी के पास द EU GMP सर्टिफिकेशन नहीं है. इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे रेगुलेटरी बॉडी कहाँ है, यहाँ पे EU GMP के इमैजिनेशन वहाँ है, यहाँ का USFDA. तो USFDA का रिप्रेजेंटेटिव FDA भवन हमारा खुद है, तो यहाँ FDA भवन है. क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट यहाँ क्या है, ग्रेटर यहाँ रिस्क मैनेजमेंट को ज़्यादा इम्फेसिस किया गया. EU GMP में एक बात समझिए कि सारे प्रोविजन मोर स्ट्रिक्टर है. एक सबसे बड़ी बात, सारे प्रोविजन मोर स्ट्रिक्टर हैं. दे टॉक अबाउट द एनुअल सर्वे ऑफ द रोड प्रोडक्ट. ये सारे पॉइंट मिलते हैं कि एनुअल एनालिसिस करते हैं, क्वालिटी रिव्यू करते हैं अपने ओन प्रोडक्ट की. एक चीज भी ऑलवेज टॉक कि EU GMP में इनके जो नोडल ऑफिसर्स दे कम दे विजिट योर साइट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रेगुलेशन. बट हियर वी डोंट फॉलो. So they even the EU GMP, what I have orange book, what I have gone through books, they even go for the raw material side. I haven't been, I didn't get the opportunity to work with them, but what I have told, rest of the many things they go, the formal process of the validation things are there. यहाँ क्या है, यहाँ product को COPP वो talks about the mostly on the product. Here they talk mostly on the quality. So these are the few points which are the difference between EU GMP and WHO GMP. This is the most important point. Next, these are the usual problems. Regulatory agencies के लिए या हमारे systems के लिए these are the basically problems. Funds problem. अब तो नहीं रहा है इसके साथ fund की problem. Thanks and congratulations for secretary current government was making more emphasis on the quality parameters. These schemes have been launched, and the entire system is getting transformed. Because definitely धन है तो सब कुछ है. Everything much more 3, 4, 5 times आप कहते हैं. हमारा बजट बढ़ गया, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गया, मेरी टाइम बढ़ गया. This is all due to this point problem of that lack of the knowledge on part of the applicant. Applicant को पता ही नहीं होता हमारे यहाँ पे को कैसे अप्लाई. And the lethargic mindset, अरे कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे. हमारे पास तो समझ लेंगे. Blank back to original condition of after certification ले लिया. What happens? It happens in every system. एक बार certification मिल गया, उसके बाद होगा इंस्पेक्टर को कुछ कर दिया काम. तो यही होता है कि वो साइकिल है. समटाइम्स ऑडिटर्स को भी, मेनी टाइम्स ऑडिटर्स को भी लैक ऑफ नॉलेज होता है कि व्हाट हैज टू बी ऑडिटेड. एंड सिमिलरली टीचर्स एज वेल एज ट्रांसफर स्टेटस where I emphasize more on this. Anybody could be designated as a inspector. Anybody could be designated as a licensing authority. Anybody could be designated as a product approval committee. आपके पास वो किसी को भी डिजिग्नेट कर देते हैं. ही और
legislation is something different, teaching is entirely something different. वो दोनों का difference में a bridge needs to be created. Not only designation, he or she must be graduated on the requirement. It is not a easy enough to crack. He should be exposed properly, not see any professor, lecturer, he has been and lack of time for thorough. समय नहीं है, गए 2 दिन के लिए घूम घाम के चले आए. So these are the some problems faced by the regulatory agencies, not to issue and also to not proper follow up of these entire guidelines. Next, these are the use. इसको ले सकते हैं, जो कहीं कहीं से चोरी करके इधर उधर चले आए, इसको आप ले सकते हैं. इस पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. You will get a lot of things here and you can use this website for your reference purpose in the future. हमसे ज़्यादा अच्छा, हमसे ज़्यादा डिटेल you can get here. And if you are interested, and I will request all of you and some of you, this is a bare area. जहाँ जहाँ इंस्पेक्टर्स हमारे पास जीएमपी, सीडीपी, जीएमपी के लिए बहुत हैं. EU, WHO, GMP और EU GMP के there are no auditors. Very few counted people are there. This could be area of your resource generation and career. अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, जितनी जितनी चीजें मैंने स्लाइड में कही, इनका अगर 50% भी निकाल के पढ़ लेते हैं, तो यू विल बी द बॉस. You can translate and you can be good auditor and there is a lot of interest. जैसे मैंने पहले कहा ना, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का इंटरेस्ट होगा, हमेशा होगा, अगर होगा इधर दिस गवर्नमेंट और दैट. ये प्रोडक्ट होगा, डेफिनेटली पीपल हैव द इंटरेस्ट. तो दिस कुड बी एन एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट. ऐसा नहीं कि हम टीचर हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम इंस्ट्रक्टर हैं. It could be very good area for your bread and butter, and in turn it will help our country. Next, and this is last. Thanks for your patience. आपने ध्यान से सुना, मुझे कम पूछा, मैंने कम बताया. खाने के बाद बैठे रहे और हमारे सीनियर भी बैठे रहे. जिनको मैं सुनता था वो मेरे सामने बैठ के सुने. मेरे बैकग्राउंड पहले काउंसिल करा है, वेरी क्लियरली, and he has been my boss, he has been many years. So he has been sitting in great and सर तो सर ही है. सर की तो छत्र छाया में, तो सर को तो थैंक्स है ही है, but thanks to all you people. I try to give what I have captured, what I have in entire of 30 sector. Anything else is required, you are always welcome. कभी भी and आइए, मुझे पता है कभी कोई ऐसी बात हो, कोई भी एनीथिंग हो. रेगुलेशन पे मुझे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी अपब्रिंगिंग, प्रोफेशनल अपब्रिंगिंग में रेगुलेशन रहा है. तो वो चाहे जीएमपी हो, पीजीपी हो, एक्ट हो, एक्ट की पर्सनलिटी मुझे कई बार अपॉर्चुनिटी to work on the act NDPS act, FSSAI के acts. These are all area of my interest. You all are welcome any point of time to me. My number is here. All details are here. Any point you can talk to me. You can contact me. If I can help you 10%, that is my excellence. Thank you. Thank you. शेड्यूल टी की बात कर रहे हैं ना. शेड्यूल टी लिया ना अपना, हमने जो आपकी फार्मेसी में ना साल में 2 बार, हमने तो साल में 2 बार रूल कहता है, साल में 2 बार है ना. रिलैक्स कर दिया, लेकिन रूल में तो है कि साल में 2 बार, 2 बार है, 2 बार मैंडेटरी है सर. स्टेट वाले आएंगे. हाँ हाँ, सर हम कहाँ करते हैं, कुछ नहीं करते. बस एक आप और करेंगे, आप भी ट्राई करेंगे और बताते रहेंगे. इसमें ना तो किसी को अपने एज वाइज सोचना चाहिए, ना पोस्ट वाइज सोचना चाहिए. मेरी कोशिश रहती है, अगर उसमें कमरे से जितना पॉसिबल हो सकता है तो अपने काम भी करता रहूँगा, चिंता भी रहूँगा. और मैंने अपने अपने लोगों को भी हाँ, और आपको ही नहीं, अपने लोगों को भी सोचता हूँ. मेरे एक डॉक्टर होते हैं,
फिर मुझे लगता है 2-3 अटेंड नहीं करे मैंने बीच में, तो फिर मैं चौथे में से आ गया। तो भई ऐसा तो नहीं मैं कुछ भूल गया हूँ, ज़रा देखकर तो हमेशा सीखते रहना चाहिए। और हर कोई एक्सपर्ट किसी न किसी चीज़ में ज़रूर होता है। हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं अपने स्टाफ को भी कई बार बताता रहता हूँ कि एक मोची होता है, तो उससे कैसे मैंने एक बार देखा, उसने माचिस की तीली जलाई, वो फीता होता है ना, तो फीता आगे से बेकार हो जाता है। उसने नीचे से जलाया, तो गर्म हो गया, तो उसने ऐसे किया और वो सीधा हो गया। हमने उसको उसके ऊपर पानी लगाया, घी लगाया, तो उसको अंदर गया। तो मतलब उसकी R&D है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा हम कभी सोचा नहीं कि ऐसे गर्म करके हो सकता है। एक किसान अगर खेत में हल चलाता है, तो कॉर्नर में उसको कहाँ बैल को कैसे हाँकना है कि कॉर्नर बिल्कुल वही है, आगे को मैं आप नहीं कर सकते। हर कोई अपने आप में एक्सपर्ट अपनी अपनी जगह होता है, और हमको ट्राई करते रहना चाहिए कि किसी को छोटा ना समझे और अपने आप को बढ़ाना चाहिए। जब ये नहीं समझेंगे तो कैरी ऑन। एक्चुअली मैडम, तो लाइक सर, वी वर्क इन R&D, तो मैंने कोई प्रोटोटाइप बनाया ड्रग का, एनुअल में स्टडी होगी, बट व्हेन आई हैव टू गिव दैट टू पेशेंट, ओके, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गए तो ट्रायल 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 ट्रायल, तो इन दैट केस जो प्रोडक्ट, अगर मैंने CTRI में रजिस्ट्रेशन करानी है, प्रोडक्ट हैज टू बी डेवलप्ड अंडर GMP। लेकिन GMP जैसे हमारी लैब में नहीं है, बिकॉज अवर लैब इज टोटली R&D लैब, तो उसके लिए मैं इंडस्ट्री से अप्रोच करूंगा कि बनवा ली। तो इंडस्ट्री उसमें बोलते हैं कि वी हैव टू रजिस्टर दैट प्रोडक्ट। अब रजिस्ट्रेशन उस प्रोडक्ट की करने में कुछ कॉस्ट भी आती है। अब हमने तो सरकारी अदारे में उसको बनवाना है बाहर से, तो उस केस में हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। पता नहीं वो कल को अभी अगर इफेक्टिव आती है, तभी उसको स्केल अप के लिए जाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जाएंगे। जी जी सर। हाँ, तो रजिस्टर वो कंपनी करवाएगी, रजिस्टर हम करवाएंगे। तो नहीं सर, मैं वही वही कह रहा हूँ ना कि उस कम अगर, नहीं नहीं सर, एक एक मेरा कंसर्न है, अगर वो कंपनी रजिस्टर कराएगी तो कंपनी बिकम दैट ओनर, है ना। अब मैं मतलब इन दैट केस वी हैव टू मेक द एग्रीमेंट, और उसके बाद हमें, क्योंकि हम उसको फॉर्मूला तो दे नहीं सकते, बिकॉज वी इन्वेस्टेड लॉट ऑफ कंपनी लेंगे। तो उस केस में हमें लोन लाइसेंस के थ्रू चलना। नॉन डिस्क्लोजर
Excuse me, sir. दो 2 साल का 12 से 15 साल चाहिए उस केस में।